Hello students, let us begin with the last lesson of Science 2, that is chapter 18, Observing Space Telescopes. In this lesson, we are going to study about the forms of light, how the telescopes are there, what are their types, how they are installed in the space, and about the ISRO organization. Students, we all know that man has been curious since century to know what is beyond the sky, how the stars and moons are seen in the sky. Then he was also confused about how the position of the stars changes with the time, and it has something to do with the occurrence of the seasons. So it was very important to know the knowledge of the seasons, which was necessary for the agriculture. So in this way, sky watching began to prove useful to man. But then he was not having any equipment to get closer view of the stars and the planet. But in the year 1608, spectacle maker and researcher Hans Lippershey, he discovered that seeing through the two lenses kept one behind the other, it seems to bring the objects क्लोजर टू अस. तो इस तरह से सबसे पहले टेलीस्कोप हो सकता है ये डिस्कवर किया गया. एंड देन इन द ईयर 1609, so approximately more than 400 years from today, so Galileo Galilei, he made the telescope and used it for space observation. He realized that there are many more stars than what we could see with our eyes, and using this type of telescope he also discovered the moons of the Jupiter, the black spots on the sky, on the sun. And so with the invention of the telescope, tremendous progress has been made in the telescope technology, in the space science, and as a technology as a whole. Space science and technology, they are not only important for the research purpose, but also it helps to provide us with many comforts and facilities which we enjoy in our everyday life. So this telescope is used to observe the space. But will one telescope be sufficient for us to observe the space? And why do we need different telescopes for the purpose? Are the telescopes installed even in the space? So all these answers we are going to get in this lesson, that is the observing space. Now before going to the topic, let us see the different forms of light. We all know that light, it is an electromagnetic wave having various wavelengths. Now the wavelength of the light from 400 to 800 nanometer is known as visible radiation. So here you can see how the visible radiations are possible. But however, there are many other electromagnetic waves other than the visible one, and which are not can be seen with our eyes, and they are not even sensitive to us. So this table, it shows us how the radio waves, microwaves, infrareds, ultraviolet rays and X-rays, gamma rays are also present along with this visible light rays. And in this way, heavenly objects, they also emit all these types of radiation. So automatically we will be needing some other type of telescopes also to get all the results from the radiations. So the optical telescope which comes into existence were like this. So this is the view how the optical telescope can be seen, and this is the diagram how we get the image of this optical telescope. So let us study in detail about the image formation in optical telescope. You can see here that the objective telescope is this optical telescope is having two lenses. The larger one is known as the objective lens, and the shorter one is known as the eyepiece. So here you can observe that to collect the maximum amount of light coming from the heavenly object, the objective lens should be made as large as possible. Now using the light which are collected by the objective lens, a smaller lens called the eyepiece, it produces a large image of the source, and so the light rays, they enter the lens from the atmosphere, and when they again go back to the atmosphere, here they refract. So this type of telescopes are known as refracting
टेलीस्कोप। तो इस तरह से यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है और हमें आईपीस से उसका जो स्टैंडर्ड साइज है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वी कैन ऑब्जर्व द image of the distant objects. But still there were some lacunas in using this. So the first was that if we wish to obtain a bright image of the source by collecting the maximum possible light, तो हमारा objective lens क्या होना चाहिए, as large as possible. But however it is very difficult to make such large lenses. तो यहाँ हम इतने बड़े lenses नहीं लगा सकते थे. Also these large lenses are very heavy and tend to get distorted. The second disadvantage of this was the objective and the eyepiece, they are placed at the opposite side. आप देख सकते हैं इधर objective है और इधर eyepiece है. So they are placed at the opposite side. The length of the telescope also increases with the increase in the size of the lens, and the telescope becomes difficult to manage. So this was the second drawback. Third drawback was that the image which was observed by the lens have the error of colors, which is called as chromatic aberration. Now, to overcome all these difficulties, these telescopes were made using the concave mirrors. तो यहाँ पे क्या होता है, rays get reflected by the mirror in this telescope, and so they are called as reflecting telescopes. तो यहाँ पे क्या होता है, in order to get the bright image of the source, these reflecting telescopes, they were installed, and it is easy to make the large mirrors as compared to making the large lenses. तो यहाँ पे हमारे सामने में दो डायग्राम्स दिखाई हुई है of the reflecting telescope. The first one is the Newtonian. इस तरह से उसका रे डायग्राम होता है, इस तरह से ये दिखता है. So this is the Newtonian telescope. So Newtonian telescope क्या करता है, the light which are coming from the space, they are reflected by the concave mirror. Now before these rays they get reflected, they are converged at the focus, and they are deflected again by using a small plane mirror. As a result, they get focused, and they are at the point lying on the perpendicular to the axis of telescopic cylinder. They pass through the eyepiece. यहाँ आपको eyepiece दिखाया हुआ है. So they pass through the eyepiece and we get the magnified image of the source. So this is how the first, that is the Newtonian telescope, works. Then comes the second type of telescope, which is known as a Cassegrain telescope. अब यहाँ पे भी आप देखोगे, it also uses the concave mirror. However, here the light rays which are reflecting from the concave mirror, they are reflected back. तो यहाँ reflection back होता है towards the small convex mirror. They pass through the hole at the center of the concave mirror and then through the eyepiece situated at the back of the mirror. Now the eyepiece gives us the magnified image of the source. इस तरह से ये reflect होके वापस हमें eyepiece से बहुत clear image देता है. So this is about the Cassegrain type of telescope. Both these telescopes are example of reflecting telescope. Now in India we have several telescopes with concave mirror of 2 meter diameter that can be used from many years. But the biggest optical telescope in India is having a mirror of diameter 3.6 meters. तो देखो आप इमेजिन कर सकते हो 3.6 मीटर्स का डायमीटर है, यानी ये कितना ह्यूज टेलीस्कोप होगा. नाउ इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया. It is situated in Aryabhatta Research Institute of Experimental Sciences at Nainital. So students, this is our largest optical telescope in India as well as in Asia. So these are the types of reflecting telescope. Coming to the another next type of telescope, that is known as a radio telescope. We all know that many heavenly bodies, they emit the radio waves in addition to the visible radiation. But we cannot see this radiation. So a special type of telescope is used to receive this, and it is called as radio telescope.
It is made from one or more dishes of a particular parabolic shape. आपको यहाँ पे छतरी के जैसे दिख रहा है. As in optical telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus. तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो होते हैं इन्हें यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज किया जाता है and radio receiver is placed at the focal point which is giving the information, which is collecting the information by the receiver and it is passed on to the computer. यहाँ से ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है which analyzes it and construct an image of the source. इस तरह से जो heavenly bodies रेडियो वेव्स एमिट करते हैं उनके सोर्सेस, उनके इमेजेस, उनके इंफॉर्मेशंस हम निकाल सकते हैं. अब हमारे इंडिया में बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है GMRT. यस, द लार्ज रेडियो टेलीस्कोप. इट इज़ कॉल्ड एज जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप और इसे इरेक्ट किया गया है नारायण गांव नियर पुणे में. तो ये क्या करता है? इट यूजेस द रेडियो वेव्स हैविंग द वेवलेंथ ऑफ अबाउट अ मीटर कमिंग फ्रॉम अ प्लैनेट. सो ऊपर से जितने भी प्लैनेट से रेडियो वेव्स आ रही है इसे ये रिसीव करता है. दिस टेलीस्कोप इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ 30 डिशेस. तो आप इमेजिन कर सकते हो इतनी बड़ी बड़ी 30 डिशेस एरिया जो है यहाँ पे है एंड इट मेजर्स अप टू अबाउट 25 किलोमीटर्स अक्रॉस एंड इट इज़ मेड इन सच अ वे दैट if it works as a single dish having a diameter of 25 किलोमीटर, यानी इस तरह से अरेंज किए हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी छतरी है जिसका डायमीटर 25 किलोमीटर है और वो वहाँ काम कर रहा है. सो इट मीन्स दैट द GMRT gives the same data that would have got from the telescope having a single dish of 25 kilometers diameter. This GMRT has been made by the Indian scientists and engineers at minimum cost. तो कम से कम खर्चा होगा ऐसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है. It is now a world standard research facility and scientists all over the world they are coming here to India to make use of this facility. यहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते हैं? तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का स्टडी किया जाता है. सोलार विंग्स, पल्सर्स, सुपरनोवा, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स, इतनी सारी डिटेल स्टडी यहाँ पे की जाती है. सो इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर. तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है ना. अब देखिए हमने ये सारे टेलीस्कोप्स देखे. अब ये टेलीस्कोप्स क्या थे? तो ये टेलीस्कोप्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में थे या माउंटेन्स में थे या जहाँ पे हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम होगी ऐसे. बट स्टिल देयर वेयर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस, क्योंकि क्या होता है कि जब ये विजिबल लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द हेवनली बॉडीज इट हैज़ टू पास टू द अर्थ एटमॉस्फेयर टू रीच द अर्थ सरफेस. अब जब ये जर्नी इनका शुरू रहता है तो सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच शुड रीच द अर्थ सरफेस डिक्रीज हो जाता है. अब ये लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? हमें क्लियर इमेज नहीं मिलेगा. सेकेंड प्रॉब्लम है कि चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. कुछ किलोमीटर्स पे टेम्परेचर वेरी होते हैं, एटमॉस्फेरिक वेरी होता है. तो इस तरह से यहाँ टर्ब्यूलेंस आता है और हमको जो लाइट रेज यहाँ पे आने चाहिए उनके पाथ स्लाइटली चेंज्ड होते हैं एंड देयर बाय दे शेक द पोजीशन ऑफ द इमेजेस जो हमें यहाँ अर्थ पे ऑब्टेन होती है. तीसरा रीज़न है कि सनलाइट की वजह से वी कैन नॉट यूज़ द ऑप्टिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो सिटी लाइट्स, क्लाउडी वेदर्स दे कॉज द डिफ़िकल्टीज इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडीज़. अब ये सारे प्रॉब्लम्स को हमें रिड्यूस करना था. सो दीज प्रॉब्लम्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड सो द इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय द स्पेस टेलीस्कोप्स वुड बी ब्राइट एंड वेरी क्लियर एंड विल रिमेन एट वन प्लेस. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं अगर हम हमारे टेलीस्कोप डायरेक्टली स्पेस में ही इंस्टॉल करें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टेलीस्कोप्स विच आर प्लेस्ड इन द स्पेस. सो 2 telescopes are included in our syllabus. First one is the Hubble Telescope. This
this Hubble telescope, it was installed by NASA, the National Aeronautics and Space Administration, in the year 1990. It has a mirror of diameter 94 inches और ये हमारे अर्थ का ऑर्बिटिंग करते रहता है, घूमते रहता है, कितने हाइट पे? तो 589 किलोमीटर्स पे ऑर्बिट करते रहता है ये टेलीस्कोप. इट इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प अस टू मेक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. सो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द हबल टेलीस्कोप. उसके बाद जो सेकेंड टेलीस्कोप आपको दिखाया है वो है चंद्रा टेलीस्कोप. इसे 1999 में इंस्टॉल किया गया बाय द नासा एंड इट इज़ अ एक्सरे टेलीस्कोप. तो ये क्या करता है? जो भी हेवनली बॉडीज जो एक्सरे एमिट करती है उन्हें वो एब्जॉर्ब करता है एंड इट हैज़ गिवन अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्स, अबाउट द गैलेक्सीज. एंड दिस टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. एंड दिस इन्होंने बहुत काम किया है हमारे स्पेस साइंस में. सो इन ऑर्डर टू ऑनर हिम दिस टेलीस्कोप्स आर नेम according to him. So students, these are the two telescopes which are installed in the space. There are many more but these two are included in our syllabus. Now let us study how these telescopes are installed. आपके दिमाग में आता होगा कैसे हम स्पेस में भेजते हैं. सो देयर इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूट विच इज़ वर्किंग एज अ ISRO. यू माइट हैव लर्न इट, that is Indian Space Research Organization. The main branch is at Bengaluru. It was established in the year 1969. 1969 में इसे establish किया गया with the aim of developing technologies for making and launching of artificial satellites. तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाते भी हैं और उन्हें लॉन्च भी करते हैं. टिल डेट ISRO हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. ISRO प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स कर रहा है हमारे देश में और India's progress in the space science has played a big role in the nation and social development. आपने देखा होगा यहाँ इनसैट सीरीज़, जीसैट सीरीज़ सैटेलाइट्स की जो सपोर्ट करती है हमारी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग को और मेटीरियोलॉजिकल सर्विसेज को. इट इज़ बिकॉज ऑफ द ISRO दैट वी कैन, हम लोग आराम से बैठ के टेलीफोन पे कहीं पे भी दुनिया के कोई भी कॉर्नर के लोगों से बात कर सकते हैं, टेलीविज़न के लाइव मैचेस देखते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी हम को अवेलेबल है कि हम कहीं पे भी बैठ के एवरीवेयर इन द कंट्री वी कैन सर्च. एडुसैट नाम का जो सैटेलाइट है इसकी सीरीज़ एक्सक्लूसिवली एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है. ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो इसमें ये काम किया जाता है. IRS सैटेलाइट्स जो होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं. दे आर यूज फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट. कहीं अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होगी, कोई डिज़ास्टर आने होगा तो हमें अर्ली वार्निंग्स इसकी मिल जाती है. एंड देन हियर इज़ द डायग्राम ऑफ एस्ट्रोसैट. आपको एस्ट्रोसैट दिखाया हुआ है. तो ये एस्ट्रोसैट जो है इट वॉज लॉन्च्ड बाय ISRO इन द ईयर 2015 एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इट हैज़ अ अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप्स विथ डिटेक्टर्स. सो इसके पार्ट्स जो है ये हमारे बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में ही बने हुए हैं. इट इज़ अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीस्कोप्स ऑन अ सिंगल सैटेलाइट. तो इस सिंगल सैटेलाइट पे ये सारे सिस्टम्स लॉन्च्ड है एंड इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग दिस डाटा ऑब्टेन्ड विद दिस टेलीस्कोप. इस तरह से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द objects which are present in the heavens, they are now considered and various other studies are going on. So students, you can observe कि किस तरह से हमको ये सारी चीज़ें फ़ायदे की होती है और ISRO ही इसी में मेजर रोल कर रहा है. So in this way we are observing the space with the help of the telescope. I hope you all have understood the concept and with this we have completed the syllabus of science too. So all the best, score well, do well for the exam. Thank you very much.